कंफ्यूज बिटवीन मे एंड माइट? क्या आप शुड और वुड में कंफ्यूज होते जा रहे हो? डोंट यू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड? आखिर कब तक होगी इन दोनों वर्ड में लड़ाई? आपको एकदम सताए जा रहे हैं. व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मे? व्हेन टू यूज माइट? व्हेन शुड आई यूज शुड? एंड व्हेन शुड आई यूज वुड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड? नाउ दिस इज द टाइम टू स्टॉप फाइटिंग. अब कोई लड़ाई नहीं, only पढ़ाई, right? So this is Nilanjan Bose from CIMAGE Group of Institution, and I am here to let you know what are the differences between these two models like may and might, should or would, and can and could. आज का इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे, चलिए हम लोग सीखते हैं कि इन दोनों वर्ड में डिफरेंसेस क्या है. एंड आफ्टर लेटिंग यू नो, you will be quite sure, I am quite sure that you people will come to know that what are the differences between these two words. और उसके बाद जब भी आप अप्लाई करोगे आपका गलती कभी नहीं होगी. So without wasting time, let's get started today's session. ध्यान से आप सुनोगे, वीडियो का अंत तक देखिएगा ताकि आप pretty sure हो जाओ कि इस दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है, may, might, should, would and can, could में, right? सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय मे. मे का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, चलिए हम लोग जान लेते हैं. First of all, let me tell you that may is used in case of expressing possibility. जब possibility के बारे में हम लोग बात करते हैं, कोई संभावना की व्यक्त करते हैं, उस केस में हम लोग may का यूज करते हैं. And what is the percentage of getting that chances implemented? उस chances कितना बनती है, possibility का percentage क्या होना चाहिए? Of course, I will let you know, and that is all about 90%. तो आप समझ जा रहे होंगे, कोई भी ऐसा एक्शन हम मन में सोच रहे हैं ये होने वाला है, अगर वो 90% चांसेस रहती है कि हाँ वो होगी ही, उस केस में हम लोग मे का यूज करेंगे. एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं ताकि आप आराम से इसको समझ जाओ. इट मे रेन इन द इवनिंग. You were talking about rain in the evening, but you have added may before rain. Why? Because you are pretty sure that there are high chances of getting rain in the evening session. So very simple. Don't be confused. May is used in case of expressing possibility, and in that case, chances will be really, really high. If I say in percentage, it should be around 90%. सो दैट इज ऑल अबाउट मे. जहां पॉसिबिलिटी होगी, चांसेस बहुत हाई होगी होने का, उस केस में हम लोग मे का यूज करेंगे. लेट्स स्विच टू माइट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे. माइट मे का पास्ट फॉर्म है. सेम थिंग इज रिपीटेड. इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, but one matter is completely different, one segment is completely different, and that is when we use might, the chances are less in comparison to may. I talked about 90% chances in case of may, but here the scene is something different. Here we talk about 50% chances are going to be followed. If it is 50%, then we should use might. If it is 90%, we should use may. With the example, you can understand in a better way. As in the first case, in case of may, it is written that it may rain in the evening. शाम के टाइम बारिश हो सकती है. But आप pretty sure हो, आप sanguine हो, yes, 90% chances are there to have rain. उस केस में आप may expressing possibility वाला मॉडल को यूज करोगे. Whereas on the other hand, if we talk about the chances are less, it might rain in the evening. शाम में बारिश हो सकती है तो नहीं भी तो हो सकती है. If the chances are less, 50-50 मामला, in that particular case, you will say that I am supposed to use might. So this is the basic difference between may and might. Just do remember one thing, that may means extreme possibility, high chances, whereas might, less possibility, less chances. Correct? I am quite sure that all of you have understood what is the basic difference between may and might. And later on, I will present some exercises for you as well. Now, let us switch to the next sort of differences, between these two words. First of all, I will talk about can. Can का use हम लोग कब करते हैं? Can is used to describe an ability or permission. कैन का तब हम लोग यूज करते हैं जब कोई एबिलिटी, कितना समर्थ है, इसको समझाने के लिए या परमिशन देने के सेंस में. राइट? इट्स वेरी क्लियर. आप इस चीज से फेमिलियर हो, कहाँ कैन का यूज करें. इफ आई से दैट आई कैन डू द वर्क, इट इज एक्सप्लिसिटली शोइंग माय एबिलिटी टू डू द वर्क. राइट? तो इसमें पॉसिबिलिटी कितना परसेंट होना चाहिए, ये तो मन में आपका प्रश्न जरूर उठ रहा है. इसका पॉसिबिलिटी है 90%.
सो इट्स हाई पॉसिबिलिटी कि आप इस काम को कर सकते हो, इसीलिए वहां पे कैन का यूसेज होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ओपन दैट डोर फॉर यू, आपके लिए दरवाजा मैं खोल सकता हूँ। इट मीन्स दैट इफ यू कम and knock at the door, I am the first person who will be running up to you and I will open the door. Means chances are 90%. Let us switch to expressing possibility. Could का यूज कब करते हैं? Expressing possibility, अपने आप को, भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि ये हम काम कर पाएंगे या नहीं। Weak इस किस बात को इंडिकेट करते हैं? We were discussing about strong possibility in case of can. But here, in this particular case, we are talking about weak possibility. Why? Because 50-50 वाला मामला है, इसमें weak possibility हो जाता है। Example, could you have someone carry my bag upstairs? कोई तो होंगे, कोई ऐसा है क्या जो मेरे बैग को कैरी करते हुए ऊपर ले जाएगा? कोई बंदा यहाँ पे आपका एग्जाम्पल, कोई बंदा ये क्लियर कट नहीं बोल रहे हैं कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। बट यस, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट a possibility and that is considered weak, in that case we will use the word could. It is to be used as modal auxiliary. So what is the basic difference between can and could? Can तभी यूज करेंगे जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात होगी, और कुड तभी यूज करेंगे जब वीक पॉसिबिलिटी का बात होगी। Right, you should be absolutely clear about that and you don't have any doubt in your mind regarding the differences between can and could, what I suppose. Now नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स में हम लोग जाते हैं जिसका डिफरेंसेस भी हम लोग जान लेंगे, ताकि आपका मॉडल ऑक्सिलरी का कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए। It's going to be interesting to know what is the difference between should or would. Should कब यूज करे और would कब यूज करे? Generally, should refers to an obligation, a necessity, or something that has a high probability of happening. Should का यूज तब करते हैं जब आपके लिए कोई कर्तव्य हो जाए, जब ऑब्लिगेशन आ जाए और आपके लिए बहुत जरूरत वाला चीज हो जाए, उस केस में हम लोग, जिसमें प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगा कुछ घटना घटने का, उस केस में हम लोग शुड का यूज करेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल को जान लेते हैं सो दैट यू शुड बी एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट। सैम शुड बी हियर सून। सैम जो एक पर्सन है, एक पर्सन का नाम है, वो बहुत जल्द ही यहाँ उनको होना चाहिए। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑब्लिगेशन या नेसेसरी, फॉर द प्रेजेंस ऑफ सैम इज वेरी नेसेसरी ओवर हियर। इन दैट सेंस द सेंटेंस हैज बीन प्रोड्यूस्ड दैट सैम शुड बी हियर सून, मतलब किसी भी कीमत पे, हर हाल में ये उनके लिए उचित है सैम के लिए यहाँ आना। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी, उस केस में हम लोग यूज करते हैं शुड। Now let us switch to would. Would कब use करें? Would is used to refer to a desire, customary action, or even a hypothetical situation. What does it mean? अब देखो, जब मन में कोई इच्छा हो, likely to happen, likely to have, उस केस में हम लोग would का यूज करते हैं। It's customary action or even a hypothetical situation. एक एग्जाम्पल के जरिए आप बेटर तरीके से समझोगे। एग्जाम्पल, इफ आई विन द मैच आई वुड गो फॉर अ वेकेशन। अगर मैं मैच जीत जाऊंगा तो हम एक वेकेशन में चले जाएंगे। एक्चुअली यू आर थिंकिंग अबाउट दैट टू हैपन इन द फ्यूचर। देयर इज नो ऑथेंटिसिटी रिगार्डिंग दैट। इफ इट इज अ विश, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ विश इन योर माइंड, जो आप डिजायर फॉर्म कर रहे हो, कोई आपका मन में डिजायर चल रही है, उस केस में हम लोग इसको would का यूज करेंगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन should and would, when to use. Let us know that what is the exercise जिसके जरिए हम लोग सारे तीनों वर्ड का जो डिफरेंसेस अभी अभी हम लोग सीखे, जैसे may, might, can, could, should, would, वो एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि एक्सरसाइज कैसा है। So here I am going to present the quiz session for you. Depending on all the lecture, whatever has been provided by me just a while ago, एक बार टेस्ट करने की भी आवश्यकता है कि आप इस चीज को जानकारी रख रहे हैं कि नहीं। It is to be considered असाइनमेंट। आपके लिए क्विज सेशन है, आप जरूर घर में वीडियो को और एक बार देखिए और इस क्विज को, जो भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड all the basic differences between may and might, can and could, and would and should. Depending on that, on your understanding, here is an exercise to be presented by me to you, all of you, and you will just do this homework and you will try to solve it out to clear your concept rather. So total six questions have been provided to you, and you were supposed to fill it up with either may or might, either can or could, either should or would.
Right. So for the last, I think 15 minutes, I have been delivering a lecture to you regarding the differences between may, might, can, could, should, would. I am quite confident that all of you can easily understand that what are the differences. And now onwards, you just promise to me that yes, you are not going to do any kind of mistake regarding the application of all these model auxiliaries. So I have tried my level best to satisfy your need. And from the perspective of the students, if I think that yes, it is going to be beneficial for you, because if you know what are the differences between these words, definitely you'll be in a better position to frame the sentences, right? So here I end my lecture and the video session of today. And definitely you have enjoyed. If you have enjoyed it, if you have liked it, then definitely you can subscribe the channel, and you should put your comment in the comment box as well. You are most welcome. In the coming days, I will be presenting more interesting videos to you, and that those videos will be definitely beneficial for you. That's all. Take care. Bye-bye. Thank you so much.